Hi, everybody. Today we have Awais Imran with me today on my series called Investing at 25. Whenever I hear anything related to UX design, Awais is the first person that pops in my head. But today I want to know more about the man behind that title. And Awais, I came to know about your link tree as well. I think I was going through a few things right before this to do some research. I knew already about the field that you're in, but to find out more about, the journey and how you started. So I went through your link tree and I really liked the division. Awais the human, Awais the professional, and then you had your Zen life and travel, and then just an overall umbrella, like a view of who you are. So for me, it's just really important to understand how you started your journey, where you started, because you also started your journey from Pakistan, like I did. And mashallah, you've built a really, really good career for yourself, mentored so many people. You have your own community that you're leading. So feel free to, let me know more about how you started. And yeah, I'm going to give it over to you now. हाँ बिल्कुल तो I think obviously we can go like as in हम zoom out करके जाएं तो we can go all the way to childhood but like that might be too much so I'll start around I think university के ज़माने में तो उसमें I would say मुझे हमेशा से be looking at my elders जो सारे adults थे in my broader जो भी आपका network में उसमें मुझे नजर आता था majority जो लोग हैं ना like I would find a lot of people who were working these jobs like वो 10-10 घंटे काम कर रहे होते थे and it would be generally look at how happy they were and I would see a lot of people जो के काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे but they were just like why am I doing this job why am I living this life they were questioning everything I would say FSC और से आगे से throughout मेरे ना I had a very strong perspective on कि भाई I must live an intentional life particularly when it comes to work अगर मैंने 8-10 घंटे रोजाना लगाने हैं तो those 8-10 घंटे better be good और जब नहीं होते तो मुझे बड़ी उलझन होती है तो उस वजह से I would say मेरे जो भी मैंने अभी तक चीजें की हैं it's fueled primarily by a strong dislike for living an unintentional life कि like मुझे उससे बहुत कोफ्त होती है and to ensure कि if you do want to live an intentional life like basically बहुत ज़्यादा variety है दुनिया में you can be so many things right to get around that basically I was just really curious throughout or I kept experimenting with a lot of things when I think I started I started writing like अपने free blogs में तो like wordpress.com पे करके yeah. 7th 8th 9th like मेट्रिक वगैरह के ज़माने की बात है तो उसमें I used to write करते करते I discovered कि blogging is like a whole industry और पाकिस्तान में बड़े बड़े bloggers हैं जो मैं उस ज़माने में और अभी भी like basically I used to be very impressed by them Yeah. 30 to 50 lakhs a month मैं कहता हूँ यार ये क्या कमा रहे हैं इतना पैसा कमा क्या करते होंगे और राइटिंग का मुझे शौक था तो करते करते एक्सपेरिमेंटेड विद ब्लॉगिंग मेट्रिक एफएससी में उसके बाद आई अंडरस्टूड कि मुझे आई वांट टू बी नियर लाइक आई लाइक सॉफ्टवेयर इवन आई यूज्ड टू डू वेरी नर्डी स्टफ लाइक अपने नोट पैड में लिटरली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं डिफरेंट जो है ना एक डॉक्यूमेंट आता था कि भाई बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है तो आई वुड इंस्टॉल कि जी अवीरा अवास्ट और फिर अपने तौर पे कंपेयर करता था लाइक आई वुड रियली एंजॉय दैट तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर का मुझे शौक था जिसके बेस और अम्मी अब्बू ने कहा था कि बेटा तुम इंजीनियरिंग करनी है तुमने तो मैंने इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर okay sure okay let's do this but I once I got into the field I realized कि नहीं this is like while I like being in the general field of software I don't necessarily like implementing it तो फिर I luckily discovered design as a field and just explore that उसके मैंने online courses किए practice वगैरह की और eventually I got my break through RBSoft हाँ तो उसके Your बाद degree is also in engineering, right? the degree is in software engineering yes Right, and you studied from NUST. जी जी हाँ Correct. And after that, have you studied as well? Yeah, after that, you were just more नहीं focused. नहीं मेरी तालीम जो बैचलर्स तक है मास्टर्स नहीं किया मैंने much to my parents disappointment Right. But not really at the same time, right? हाँ मैं mixed है थोड़ा How did you even like move from engineering to design? And how did that actually help you? Because I do understand that her career, it's not like completely black and white. Kuch na kuch elements you do take forward, right? To whatever role that you move on to. So how did that help you in your next role? बिल्कुल तो आई थिंक इंजीनियरिंग करने का सबसे बड़ा फायदा तो डेफिनेटली मुझे ये हुआ है कि मैं बड़े कॉन्फिडेंटली अपने इंजीनियरिंग जो मेरे पार्टनर्स हैं इन माय कंपनी जिनके साथ मिलके हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी होती है आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली स्पीक टू देम दे कैन जो है ना विद ट्रस्ट स्पीक टू मी कि भाई वैसे हम बात करें ना एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की बैकएंड की कंप्यूटर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है तो मुझे मोटी मोटी बातें समझ आ जाती है मैं उनकी बात उनके लफ्जों में उनकी बातें समझा सकता हूँ वो मुझे समझा सकते हैं
जबकि डिजाइनर्स जिन्होंने अगर लेट्स से उनकी डिजाइन बैकग्राउंड उनका, तो दे हैव टू डू और नेचुरली हैव टू डू लिटिल मोर एफर्ट, लाइक उनको खुद अपने तौर पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन चीजों की टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर, जो कि मुझे इट केम बिल्ट इन माय पैकेज. This might have to do more with my metric FSC वाला background. In metric FSC, as you know, like it's a lot of rote learning. I think मेरे जो from academic perspective में भी मेरे physics, maths के concepts strong हो सकते थे for sure. But I would say it really taught me how to do really hard work. Like in metric FSC में like it was normal कि आप like 7 से 2 बजे तक स्कूल में हैं, उसके बाद निकले ट्यूशन ली 2-3 घंटे की, फिर शाम को बैठ के like 1-2 घंटे की ब्रेक मिलती थी, उसके बाद keep studying again. तो like वो that taught me कि पीछे hard work जो है is something I can do. Like I don't shy away from it जब करना पड़े. Really good. That's really nice. And how was your time at NUST? Like your 4 years of bachelor's degree, did you like get a job right away? Because I do understand that sometimes people, even in the top universities in Pakistan and abroad, right, there is that stigma around not every university or not every big university is going to help you land your very next job right after you graduate. So how was that journey for you? Like finding a job right after you graduated and then, building your network and, starting your own company as well, because you had Priceway as well in the middle of your journey, which was amazing. I was a user, so yeah, it was a really good product. So feel free to talk more about that as well. NUST का मेरा essentially experience कुछ ऐसा था कि I would generally want, like in hindsight, I feel like मुझे थोड़ा ज़्यादा broader experience मिल सकता था. Like NUST में, it's just like आप 4 साल बस एक चीज़ पढ़ सकते हैं, software engineering कर लिया आपने, so there's no variety. So I think I really missed that. But otherwise, given कि मेरा जो था ना blogging वाला network था, because I was blogging since I was in FSC, तो उस वजह से bloggers वगैरह का network काफी था. उसमें there were people who had their own software companies. So like I found a job through one of those contacts. I would say कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ यही थी कि क्योंकि when I was graduating, I was still in that phase जहाँ पे मेरे आसपास सारे लोग जो हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई फ्रंट एंड इंजीनियर बन रहा है, कोई QA इंजीनियर, कोई बैक एंड इंजीनियर, और मैं हूँ जो कि आई एम प्रेशराइज्ड बाय ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे है घर वाले सारे देख रहे हैं कि अच्छा भी ये इंजीनियरिंग हमने पढ़ी है इसने और इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, ये छोटा सा बच्चा बेवकूफ है, इसको क्या पता क्या बातें कर रहे हैं, डिजाइन क्या होता है. तो वो एक बड़ा टफ पीरियड था. आई थिंक इट्स टफ फॉर एवरीवन, क्योंकि लाइक आपकी बिल्कुल एक चैप्टर ऑफ योर लाइफ खत्म हो रहा था, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर्क. तो हाँ, आई वुड से इसमें नस्ट का, अदर देन द फैक्ट कि उन्होंने मुझे लाइक एक एकेडमिक माहौल दिया जिसमें आई वाज एबल टू बिल्ड अ नेटवर्क, उसके अलावा आई वुड से लाइक इन गेटिंग दैट जॉब एज सच, लाइक आई वाज लाइक थ्रू माय नेटवर्क. और I would say I did find it, like I did find it before I actually graduated, but मुझे I mean in full honesty basically मुझे जो ना summer vacations बड़ी पसंद थी, तो मैंने my first job I asked them कि especially मुझे if I can join like after 2 months. Right. Well deserved. Well deserved. Nice. And then when did you start off with Priceway? That was your first like entrepreneurial experience as a actually that was like our third or fourth, and my third or fourth, और जो मेरे co-founders हैं नान और दिल शफी, वो तो like they're very entrepreneurial, उससे पहले भी कर रहे थे. Essentially मैं again जो मेरी एक blogging वाला एक sort of timeline है, उस timeline में मैंने I used to like पहले मैंने अपना थोड़ी blogging की, like वो भी just free, just .wordpress.com वगैरह. फिर उसके बाद I started working for these other blogs जो पाकिस्तानी bloggers थे, जो tech पाकिस्तानी bloggers. At some point basically it's an interesting story कि मैं एक इस तरह काम कर रहा था. I was earning pretty well for an FSC student, definitely like 60,000 rupees per month, जब डॉलर 100 रुपए. Oh my god, if we start talking about के डॉलर अभी triggering है थोड़ा, yes. तो yes, so जैसे like at some basically one of these blogs I was working for, they at some point basically said कि वैसे like you have a choice, you either lower your per article rate क्योंकि like we need to downsize, या आप बस छुट्टी करें. यूनिवर्सिटी का लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, मेरी अना बहुत ज्यादा थी, मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी तक $10 कमा रहा था, मैं $7 पर आर्टिकल, तो मैं नहीं कमा सकता, इज बीनीथ मी. तो anyway I chose to leave. और उससे फायदा फिर एसेंशियली ये हुआ कि गिवन कि मैं इतने अच्छे से नौकरी कर रहा था ब्लॉगिंग वाली, तो आई अगेन थ्रू माय नेटवर्क एक आध मीटिंग, एक आध हमारे मीटअप्स वगैरह थे, उसमें आई मेट अदनान, और उसने इसलिए आके भी लाइक आई हर्ड कि नो लॉन्गर वर्किंग एट blog X, so like what if we get together, like you like writing, I like the SEO part, the setting up a blog, all of that, so what if we combine forces और see what happens. तो फिर हमने back then हमने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, it was called cupertinotimes.com. पाकिस्तान से बैठ के हमने कुपर्टिनो, इधर जो मेरे घर से 20 मिनट दूर है, cupertinotimes.com हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था. It was all about Apple tech tips and tricks वगैरह, इस तरह की चीजें.
तो वो हमने स्टार्ट करके लाइक काफी रैपिडली वो ग्रो किया था, एंड आफ्टर अबाउट आई थिंक 7-8 months we were able to sell it for $25,000 while I was in university. थर्ड ईयर आई थिंक की बात थी। तो फिर हमने वो बेचा, फिर हमने इस तरह एक और चीज स्टार्ट की, एक और ब्लॉग था वाज कॉल्ड windowsclan.com। आफ्टर अबाउट 6 months to 9 months हमने वो इट वाज फोकस्ड ऑन विंडोज as you can tell from the name. तो वो again like after a few months we sold it. वो it was not as much of a उसकी ROI थोड़ी कम थी, but like we basically sold it for like $7,000 or $8,000. और उसके बाद then we realized कि Adnan and I कि we're getting bored of right like blogging तो like पाकिस्तान में उस जमाने में ना ई-कॉमर्स के like चीजें ऊपर जा रही थी, लोग कह रहे थे by 2020 it will be a $1 billion market, और हमने कहा कि पीछे भी अगर 2020 तक ही होना था हम अभी घुस जाते हैं। So that's how we basically decided कि अच्छा भाई e-commerce seems like a lucrative opportunity. And we looked at कि पीछे आगे की जो मार्केट्स हैं like इंडिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड वगैरह में, जब ई-कॉमर्स लाइक उनके क्या ट्रेंड्स थे, ई-कॉमर्स की क्या टाइमलाइन थी, तो उसमें प्राइस हुए like a price comparison service seemed like a really good idea कि like जब ज़्यादा लोग आते हैं ऑनलाइन, they're shopping online, तो they also want to know कि पीछे में okay there is a 5 websites, I want to know सबसे cheapest चीज़ कहाँ पे मिलती है। Correct. तो वो एक use case बड़ा clear है, so we went for it, और हमने भी came up with Priceway. Nice. And how long did you stay with Priceway? Like the whole team? So I was in Priceway for about 2.5 years I think. But उसमें भी like when I started Priceway with the Nan and Adil, तो मैं वहाँ में था कि पीछे I'm going to give it a honest shot for about 2-ish years, 2-3 years type. उसमें अगर if we're able to grow and if we're then able to raise funds, so we can then actually make a proper like thing out of it, so I'll stick around. वरना उसके बाद like मुझे था कि like as in I want to work in a design team, मैंने designer career अपना पकड़ना है. At that point things were we were as in startups में बहुत it's a struggle. तो उसमें 2 years into it हम grow कर रहे थे, but in terms of funding वगैरह we were struggling at that point. So at that point basically then I decided कि भाई okay, I think I should move on. उसी वक्त basically KeepTruckin की offer आई थी मुझे, then I decided कि okay like I'll go back to being a full time नौकरी पेशा मजदूर, and kudos to नान और अदील, वो उनकी जो patience है, जो उनकी long term vision वगैरह है, वो अभी तक चला रहे हैं, and it's doing super well, और it's grown. Wow. But then what have you learned so far from Priceway experience, and how did you take it to your KeepTruckin वाला experience? Because complete shift है environment का, if you think about it, right? एक जगह पे you are the one making all the decisions. कि कंपनी की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, ग्रोथ किधर जाना है, नेक्स्ट हमने कोई अगर आइडियाज अगर उठाने हैं तो कौन से आइडियाज उठाने हैं, हाउ डिड यू टेक दैट टू अ नौकरी पेशा एनवायरनमेंट? इसमें आई थिंक दो चीजें. The first thing it really taught me was कि most employees aren't very entrepreneurial. Employers really appreciate कि भी जो बंदी हम हायर करें वो बहुत ही entrepreneurial हो, self starter हो, initiative लें. तो like जब मैं KeepTruckin आया था तो like मैंने like I still have that spirit alive within me. तो मैं क्या कहते हैं like अच्छा जो है ना यार ये चीज obviously खराब है, and instead of just complaining about it, which I would still do by the way, but in addition to complaining in addition to complaining about it, I would also then go ahead and try to fix things. तो वो appreciate की जाती है चीज काफी ज्यादा. और दूसरा I think just having an understanding of कि business वगैरह, like as in I would say कि it made me a more business minded kind of designer कि भी अच्छा मैं जो चीज बना रहा हूँ at the end of the day business ने पैसे कमाने हैं, अगर पैसे आएंगे तो business चलेगा, sustainable होगा, तो फिर मैं अपनी नौकरी कर पाऊंगा. तो it just kept me grounded in कि भी अच्छा मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसका ultimately कोई business impact होगा, which helped me, which I came from having worked on Priceway. तो ये दो चीजें I would say really helped me from my Priceway experience. Right. And how long have you stayed in KeepTruckin Motive right now? Formally KeepTruckin और Motive में जो है अभी recently in fact 5 साल हुए हैं, so more than my bachelor's degree. Congratulations. It's been a long time because honestly working in a startup like that, right? एक साल counts as equally to the amount of 3 years in a traditional environment, I would say. So how have you kept yourself motivated? Because I also understand कि काफी ऐसे लोग हैं जो नहीं जैसे late 20s, 30s start progressing in their careers, and then sometimes you end up in a position where you're like, should I stay in the role that I have? Should I move on to something else? Should I try something new? So how have you kept yourself motivated in the current role, and what else do you want to learn as a designer or as a best? I think you basically sort of answered the question. Right. KeepTruckin और मुझे भी तक आदत है कि मैं 5 साल से KeepTruck में अभी मेरी पुरानी KeepTruckin चल रही है. तो motive, yes, the motive में like over the past 5 years I would say the company has changed quite a bit. Like it used to be a small company. जो CEO था शुएब, CEO है अभी भी शुएब,
Like he was just like one node away from me. Like I used to report to the head of design, Shoaib. But over time, obviously, like as the company has grown, there's now like I think 3, 4 like maybe layers between me and him. Company का जो organizational structure है वो change हुआ है. Just the way we develop things, उन चीजों की maturity. Obviously, like I've had 3 different managers over the past, so like each manager has their own sort of flavor or way of doing things. So always just felt like हर 2 साल बाद ना कोई नया एक like obviously it's within the context of KeepTruckin. तो उस वजह से things have been very like as an it's roller coaster ride चलती रहती है और उस वजह से things keep changing that keeps everything interesting. That's why I would say why I've stuck around for 5 years. Also obviously because the company helped me move to the US. तो उसमें मुझे था कि अच्छा मैं पाकिस्तान से काम कर लेना. I want to work in the US with these guys. Learn like what work is like working in Silicon Valley, quote unquote. अभी जो basically हमारे head of design है, अभी VP of design है Jadam. Like he is super experienced. Like उसका कोई 20-30 साल का experience है Jadam का. And he's like as in मेरी I'm like almost 30 अभी, तो मेरे जितनी मेरी एज है उतना उसका जैडम का एक्सपीरियंस है. तो like and it speaks for itself. Like उसकी जो उसको फीडबैक यहाँ से मिलती है, उससे जितना ग्रोथ मैं कर रहा हूँ जैडम की वजह से, तो उस वजह से I would say that's why I'm sticking around. और in terms of मैंने आगे क्या ग्रो करना है अभी, I would say generally I would say like earlier in my 20s, like even during university, right after university, I focused a lot on कि भी मैंने जो है अपनी professional growth at all costs achieve करनी है. और उस चक्कर में मैंने basically I would say personal growth, like as in उसमें obviously खुद भी as a person I was growing as well because of all the exposure, but it was coming at the cost of my physical health, my mental health, or I definitely sacrificed quite a bit of that to get to a good point. So now I would say now like I feel like I have a solid sort of आप कह लें एक अच्छी I have a really good sort of foundation, living here, immigration situation sorted out, वो सारी चीजें. तो उस वजह से now I'm able to like given the stability, now I can focus. I've been focusing on the past from like पिछले 2-3 साल से on just like a lot of mental health, like meditation, exercise very regularly, journaling, trying to travel more. Travel बड़ा मजा आता है मुझे उसका, hiking ये सारी चीजें. And at the same time physical health भी as well, like as in I used to be very fat and unfit. I used to be near like 100 kilos FSC वगैरह में. Now like I exercise daily. I've been doing it for the past 2 years. Like professional growth एक अच्छे point तक पहुंच के now वही intensity focus अब थोड़ा मेरा है कि personal जो अपनी physical और mental health है उस पे relationships पे काम किया जाए. That's really nice, Awais. Honestly, the fact that you're touching on your physical health as well as mental health, because I think इन चीजों पे बात होती है लेकिन हम लोगों के कल्चर में इतनी नहीं बात की जाती, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ मैन, क्योंकि हम लोग के आदमियों का जो अलग ही बिल्कुल माहौल है ऑनेस्टली. बड़े बहुत ज्यादा है. देसी मर्द जो बड़े इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड होते हैं सारे. I really want to put this in the video. That is very true. Oh my God. I'm just going to put the नाम ही वीडियो का यही रखते हैं, emotionally constipated. Oh my God. No, but seriously, Awais, I would love to know. I think in the West as well, and now क्योंकि हम लोग की बहुत ही हम लोग driven है, नहीं जैसे जो West में चलता है हमें भी वही adopt करना है अपनी जिंदगियों में as a culture, right? ये hustler mindset जो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है. I think especially for अभी तो मतलब teenagers we are getting involved into this, as well as people in their early 20s. People are really looking at that fire sort of mindset के मतलब retire early, कम से कम काम करो, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाओ. And उसके अंदर I think जो mindset जो shift जो चाहिए, like you mentioned, right? It still compromises a lot on mental health, right? Because हमारी priorities बिल्कुल set नहीं है. So how do you think have you shifted from going from your hustler sort of a phase now to a stable phase, and how is that helping you right now? I would say इसमें generally it definitely helped me to be like to have been a hustler, like hustling जो मैं कर रहा था. It genuinely helped me, like that is why I was able to progress really far in my career very early on. और मेरा जैसा छोटा भाई है, कोई भी मेरे cousins वगैरह हो, दोस्त यार हो, junior, उनको मैं ये recommend करता हूँ कि भाई like as in जरूर अपने early 20s में जो आपने extra मेहनत करनी है, like as in करें जरूर, like it will pay dividends for a very long long term, बहुत फायदा होगा. फर्क सिर्फ बस ये like in hindsight the only thing would be like as in you will eventually get there if you're अगर सारी आपकी habits वगैरह हैं. I think we should probably focus a little bit more, और वो हमारे हमारी I think generally society में काफी missing है. At the same time so I am a proponent of the FIRE movement. One thing the FIRE movement gets really wrong is कि भाई like as in मैंने बस maximize करना है पैसा, everything else screw that. Or I was in that mindset for a bit, I would say कुछ अर्सा पहले.
और उसमें आई थिंक बहुत बड़ा हाथ मुझे ठीक करने का इज माय वाइफ लाइक सारा जो है। Nice. तो वो कहती कि यार लाइक ठीक है तुमने यू नो लाइक यू वांट टू रिटायर अर्ली, व्हाट यू शुडंट डू इज यू शुडंट बी रिटायरिंग फ्रॉम योर जॉब, रिटायरिंग फ्रॉम हैविंग टू अर्न मनी, टू रिटायर फ्रॉम हैविंग टू वर्क फॉर मनी अलोन। उसमें देन लाइक दैट रियली रीफ्रेम थिंग्स फॉर मी, क्योंकि मोस्ट पीपल ट्रीट इट एज के पीछे हमारी नौकरी बेशक जितनी मर्जी बेकार हो, बट 5 साल बाद बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं ऐसी कि पीपल रिटायर एंड दे रियलाइज कि वेट लाइक हम लाइक एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज कि मैं आई जस्ट हेटेड माय सेल्फ और हेटेड माय नौकरी और माय जनरल सिचुएशन, एंड नाउ आई एम रिटायर्ड, तो आई स्टिल हैव ऑल ऑफ दैट, लाइक वो सब कुछ अभी मेरी जिंदगी में है, एंड आई हैवंट एक वर्कड बैगेज लेके आगे बिल्कुल जा रहे हैं। I think there's some balance to be had. Yes, you should be frugal. आप savings करें, invest करें सब कुछ, but at the same time it should not come at the cost of your personal आपकी health and happiness. In my world, for example, in my sort of budget आप कह लें, मैंने ये point आना शुरू किया था, I used to really skimp on travel as well. I really enjoy traveling. More recently जो है पिछले I would say 1.5-2 साल में अगर मुझे कोई travel की opportunity मिलती है या मुझे कोई दिल कर रहा होता है तो उसमें मैं like बगैर सोचे spend करता हूँ मैं. So that way you have like आप अपने current life को भी enjoy कर रहे हैं. Future should not come at the cost of your present. That was deep. Good stuff. Awais, last 2 questions from my side. एक के आपके लिए तरफ से क्या advice होगा to people who are graduating, or maybe because considering the circumstances right now, people are getting laid off as well. तो आपकी तरफ से क्या advice होगा for both types of people out there in their mid-20s, 30s, regardless of age? बिल्कुल, I would say एक चीज जो मैंने both as a hiring manager, having like tried to hire people in Pakistan, also as someone who जिसको growth का बड़ा शौक था, and through the community work I do, इसमें visibility मुझे काफी ज्यादा obviously है, तो उसमें I would say जो सबसे बड़ी चीज है ना जो पाकिस्तान में missing है, जो I think जो बहुत ज्यादा ROI मिलेगी सबको, for most people at least, would be gaining exposure. When I was early in my career जब design में सीख रहा था, तो उसमें I would find a lot of content online जिसमें लोग कहते हैं कि भाई एक था 90-10 रूल टाइप की चीज थी जिसमें लोग कहते हैं कि भाई you should spend 90% of your time practicing and 10% of your time reading. तो I would say वो जो गोरे की तरफ से जो टिप आती है वो हमारे लिए अप्लाई नहीं करती. I've learned through that. I would actually be studying, like reading a lot or practice. I would say 90-10 तक दूर maybe 50-50 टाइप होता था मेरा, I would say. And I think in hindsight that was the right mix for me, and it would be the right mix for most people in Pakistan. क्योंकि through those books you develop taste, you develop exposure, आपको समझ आती है कि भी अच्छा काम क्या है, बात कैसे करनी है, ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना सारे जो रीडिंग के थ्रू आपको एक्सपोजर मिलता है सब कुछ, वो मिसिंग है पाकिस्तान में. और हार्ड स्किल्स हमारी वहाँ में काफी है, लाइक लोग वो फोटोशॉप सीखना है, फिग्मा सीखना है, वो सीख जाते हैं, बट भी चीज बनानी क्या है, सॉफ्टवेयर लेके हाउ शुड द थिंग बी डिजाइन, स्ट्रेटजी क्या है, कम्युनिकेट कैसे करना है टू योर क्लाइंट और योर मैनेजर और योर टीम. एक और पॉइंट वुड बी के and this is I guess for students, this is just my experience, मेरे साथ हुआ था कि while I was in NUST, like I used to feel so, I would say dumb, क्योंकि like मेरे आसपास सारे engineers थे, ठीक है, और वो they used to put engineering at a very high pedestal, कि भाई बस engineering ही होती है जिसको HTML CSS JavaScript backend वगैरह सब चीजें आती हैं, वो अच्छा है, बाकी सब बेकार है. मैं बैठ के जो है अपने पेपर पे मॉकअप सुना रहा था, मैं जाके क्लास में दिखा रहा था, कहते हैं वैसे तो क्या बकवास ये क्या डब्बे बनाए हुए ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ये क्या यूजलेस स्किल है तेरा. तो लाइक आई यूज्ड टू फील सो बैड, maybe I should be an engineer, but what actually was happening was I was just in this environment that really put another piece of skill on a pedestal, which was not actually representative of what's happening outside of the world or what's important to me. But in Pakistan, where there's also limited options, you may find कि जो आपका अपना skill set है, जो आपका अपना authentic self है, वो it does not match with what your society or what your community or school is valuing. So if you can find in a society or a community, a group or something which values what you want out of life, it will be good for your mental health. It wasn't good for mine when I was in NUST. मुझे बड़ा टाइम लगा था समझते हुए कि नहीं, design is a really good skill to have. It's valued globally, बड़ी इसकी value है. Like I'm not just like बातें शातें नहीं कर रहा सिर्फ, like I'm actually doing, I'm contributing actual value, to the companies I work for and the communities I contribute to. That is amazing to hear. अच्छा, मेरी तरफ से आखिरी सवाल अवैस. Yes. 3 जो भी मैं बोल रही हूँ उस rapid fire sort of a question. The first thing that comes to your mind. I know it's 10:30ish San Francisco में इस वक्त. I'm hoping your brain is charged. 3 सवाल. Are you ready? Yes, go ahead. So what should people in their 20s invest their time in? अच्छा, okay. I thought rapid fire में multiple options होंगे. No. जो पहली चीज दिमाग में आएगी.
पढ़े, read a lot more, read very broadly, read deeply as well. Got it. And what should they invest their money in? पाकिस्तान में अगर है तो प्लॉट्स वगैरह में करें, लैंड में इज रियली गुड, बट इफ यू आर आउटसाइड, इफ यू कैन डू इट, तो इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स, स्टॉक इंडेक्स फंड्स होते हैं यूएस के, यूरोप के, जनरली दे आर प्रीटी गुड. रीड अप ऑन लाइक मिस्टर मनी मुस्टैश, काफी अच्छा है इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. बॉबल हेड्स एक है कम्युनिटी, you can learn a lot through that about investing if you're outside Pakistan. Nice. I'm going to get these links from you later. And what should they invest their energy in? This is for people in their 20s, right? Energy, and I think work really hard. Like obviously find the field that you are really passionate about, which you can bear, you know, more than other fields. At least it's okay to work hard in your 20s, but like keep in mind कि long term में अगर ये goal है, अगर वो goal पहुंच भी जाते हैं तो like maybe it's okay to slow down as well. When you do an investing at 30s या 35 वाली series उसमें हम कर लेंगे. True. Amazing. But thank you so much, Awais. Thank you so much.